सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो अभी मैं हूँ इस्तांबुल में और आज मैं आया हूँ इस्तांबुल की बॉस्फोरस साइड पे। और जो मैं बॉस्फोरस टूर करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे एक लोकल के साथ आया हूँ और जिसका नाम है हेलो मरहबा नमस्ते। So her name is Afsana and she is going to show me around and we are going to see that what are the good and beautiful places around here and we will show you that what places you should also visit. Exactly. So tell me about this Bosphorus bridge that why it is calling as a Bosphorus and what is its significance. This bridge is joining two sides of Istanbul, Asian and European side. And also Istanbul is the only city that contains Europe and Asia in it. Okay, and, yes. Separated with the sea. It's not sea actually, it's Bosphorus. We call it Boğaz, Istanbul Boğazı. The other side is Black Sea. This side is Marmara Sea. So two seas inside this Bosphorus. And people use this Bosphorus bridge to go for work, for travel, for every stuff. This is the second biggest bridge in Istanbul. We will move to the first biggest bridge. It's the oldest one. It was built in 1974. This one is Bosphorus Bridge, but later in 2016 it's changed to 15 July Bridge. It has a history. 15 July Bridge. Yeah. Okay. This one is Fatih Sultan Mehmet Bridge, the second. तो भाई अभी मैं हिंदी में बता देता हूँ कि बॉस्फोरस क्या है एक्चुअली। नैरो वाटरवे है जो सेपरेट करता है यूरोप साइड को और एशियन साइड को। इसके आप एक तरह आओगे तो आप आ जाओगे यूरोप में और एक तरफ जाओगे तो आप चले जाओगे एशिया में। सो वो डिवाइड करता है और लकीली वो पास होता है इस्तांबुल में से। सो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप बोल सकते हो कि आप यूरोप में भी गए थे, एशिया में भी गए थे। बिकॉज इस्तांबुल को मतलब टर्की को माना जाता है यूरेशिया एज अ पार्ट ऑफ टर्की इज कंसिडर्ड टू बी यूरेशिया बिकॉज इट covers both the Europe and Asia as well. Yeah, exactly. And this building, this fortress was built in 4 months. Imagine. 4 months? In 4 months, yeah. To defend themselves from the enemies. And on the Asian side, there is the same fortress on the Asia.
तो गाइस अगर आप इस्तांबुल में हो और आपको PCR टेस्ट कराना है तो एक सिहांगीर लैब करके है यहाँ पे लैब, कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आप टेस्ट करा सकते हो और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 5 घंटे में ही, और इनका चार्जेस है 250 ले रहा है।